हेलो। एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास विल टेक टाइम, मतलब सर आने के टाइम लगेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द अकाउंटिंग क्लास. So yesterday we had discussed. Can you hear me right? Please somebody confirm. Yes, sir. Thank you. So let us start with accountancy class. And yesterday we had gone through the AS2. So there are few problems I request. मतलब कि I started but I couldn't able to finish. Uh, have you gone through the illustrations in the study material? Study material में illustrations कोई देखा है? If there are any doubts from the illustrations which you had gone through, kindly ask. Illustrations देखा है? Yes, sir. कुछ है उसमें पूछने के लिए? Is there any मतलब कुछ डाउट वगैरह है क्या? ये तो बता देना. AS2 में कल we had completed AS2. If you are having any doubts, kindly raise your doubts. Or else I'll start with the AS7. चलो ठीक है. So I'll start with AS7. Okay, now today we'll discuss AS7. AS7 basically speaks about construction contracts. So now, if I refer it to say construction contracts, this is nothing but purely what all the construction activities involved. This accounting standard says how to recognize or how to account for the revenue in the books of accounts. So now, construction contract means a typical construction contract means a construction contract refers to the contract for construction of any type of assets. Kindly, if possible, you kindly take down these statements in your rough sheets or somewhere so that these will be helpful. These things, if you are supposed to reproduce when you are giving any answer in the examination. See, you will be having questions with respect to practical problems on the accounting standards. In addition to that, sometimes you will be asked to reproduce what is a construction. Kindly give a brief on construction contract, or even while answering the practical problems, you are supposed to reproduce one or two statements or sentences in your answer sheets so that it will be conclusive in answer. So now, a construction contract refers to a contract for construction of assets. Now here I say construction of assets means any buildings, uh, or say the bridges, roads, canals, all these comes under these assets. Building, roads, bridges, canals. So any of these construction will take generally more than 1 year. Okay. Now this accounting standard speaks of these constructions which are of generally more than 1 year. If it is less than 1 year, this there is no issue at all. If it is less than 1 year activity, there is no issue at all. The issue comes if or it is difficult for us to identify the revenue if it is more than 1 year. So the AS speaks about how to recognize the revenue if the construction contract is for a period more than 1 year. Okay, so the applicability, in simply saying, to say simply, the applicability, a standard किस किस को applicable अप्लाई होता है, और
applicable to the contracts of more than 12 months. Any contract which is of more than 12 months, this accounting standard is being applicable. Now, in a contract, how many parties are involved in general? In a contract, how many parties are involved in general? Somebody Two please. parties. Two parties. कौन कितना? Two. Nice. Two parties. Thank you. So, what term we use for these contract? मतलब two parties. What are the terms we use for these two parties? Uploaded, uploaded. G. Uploaded, uploaded. Contractor and contractee. Okay. So now one party is the contractor. Who is a contractor and who is contractee? Who is a contractor and who is the contractee? What is the The difference between? contractor is building roads in cities. Hello. The contractor will build bridges, roads, building equipment. Okay. So that is nothing but he is the person who executes the work, right? यही बंदा who is supposed to do the contract work job, and he is the person who awards the job. Say for example, a company wants some civil work. If the company, say for example oil, if he awards a contract to say for example XYZ, he becomes the contractor and company the oil will becomes the contractee. This is simple. So now this accounting standard this AS is applicable to only the contractor but not to the contractee. The contractee is need not to apply or follow this AS7. This entire AS speaks about how to recognize the revenue, or the applicability is with respect to only the contractor but not the contractee. कॉन्ट्रैक्टी के तो कुछ सवाल ही नहीं उठेगा. The contractor is the one who is supposed to follow this, or this AS is applicable. Okay. Now, generally in against this standard, what are the types of contracts we deal with? Let us understand the contracts types we are going to deal under this standard, accounting standard. There are in general two types of these contracts. One is fixed price contract and the other one is cost plus contract. Can anybody explain or say what is the difference between fixed price contract and cost plus contract? Hello. Hello. Can anybody say what is a fixed price contract? Fixed price or fixed cost contract? See, the fixed price contract is something, say for example, I went to a contractor and I asked him to build the house. और say for example the best way is मेरे को एक बेड चाहिए, और say for example मेरे को एक सोफा चाहिए. So for this sofa I went to the shop and I asked him what is the price for this sofa, and I want a custom made sofa. So I need extra length, breadth, and I need extra chairs or whatsoever. The design is different. So I asked him to prepare a sofa for me. And he told straight away, the sofa will be costing for you 5 lakh rupees. Okay. So now, as I've been there, the shopkeeper has told me that the 5 lakhs will be the charge I'll be taking if I want to prepare this sofa as per your requirement. So now for the entire sofa, only there will be a direct payment of 5 lakhs I'll be paying to him, which is fixed in nature.
सीधा 5 लाख दूंगा एंड आई गेट माई सोफा. बट वेर एज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट फिक्स्ड. It is not fixed. It is variable in nature. Or say now he will say that कि मेरे को आपका सोफा बनाने में लिए, से फॉर एग्जांपल व्हाट ही सेज दैट कि जितना भी होने दीजिए आपको, मतलब कि लेट योर सोफा रिक्वायरमेंट और द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन में बी एनीथिंग, even if it is like, if you want a good amount of wood, or if you want a cheap quality of wood, I don't bother. As per your requirement, I'll get the material and I'll prepare. Say if you want top quality wood, then it costs for you, say for example, only top quality wood, say for example, it will be costing you 4 lakhs. If it is a lower quality wood, it will be costing for you 3 lakhs. Whatever the cost may be, in addition to the cost, I want you to pay me a percentage of profit. Say for example 10% or 5% or 2%. Or if not in terms of percentage, if say for example if it is 10%, I will say 4 lakhs plus 40,000. So the contract cost will be 4 lakh 40,000. Say for example at the end, I thought ki no, in addition to this, I'll say for example I'll use some separate design or paint on the sofa. Say for example it is going to incur me another 50,000. Then the contractor has no issue. What simply he says is ki okay fine, on 50,000 another 5,000 you're supposed to pay. Then again the cost will be like 4 lakh 40 plus 55,000 will be my total cost. Okay. So what happens in a cost plus contract is, this is in terms of percentage. If it is not in terms of percentage, he will be saying, sir आपको जो भी है चाहिए, I'll make it for you, but in addition to the cost, you pay me the fixed labor charges. Say for example 4 lakhs is your cost, and I'll take my cost as another 1 lakh. So that is nothing but fixed place. So 4 lakhs fixed in nature plus some fixed amount of 1 lakh. 1 lakh. This will be my cost. These are the two types of contracts involved, and these are the two types of contracts we generally deal. Now, okay, ठीक है, दोनों तो है ही है. So in this AS says how to this AS came into picture to identify how to recognize the revenue. Say for this shopkeeper, for this shopkeeper, it will be easy to recognize the revenue over here, because uh, say for example the sofa making is taking me more than 1 year, because tabhi I will apply this standard. If it is less than 1 year, the standard is not applicable. And say for example over the period of 2 years, in the first year I had completed 3 lakh rupees of work. Okay, 3 lakh rupees of work I had completed. Matlab I had incurred 3 lakh rupees of cost as on date. Then it is very simple. While finalizing the books of accounts on 31st March, I will simply say, okay, fine, 3 lakhs काम मैंने किया है, उसके ऊपर say for example 10% is my extra revenue which I am earning. I'll simply recognize in my books of accounts 3 lakhs into 10%, 30,000. 30,000 will be my revenue for the completed year. Okay, can you able to understand? Hello. Huh. Say for example if it is fixed amount, say for example for 4 lakh rupees I had told 1 lakh will be my profit or my revenue. Then also simply 3 lakhs work I had done. Now proportionately how much should I recognize over here? Can somebody say? As on 31st March, if it is like 4 lakhs plus 1 lakh is the contract nature, on 31st March I had incurred a cost of 3 lakhs. So कितना मैं recognize करना पड़ेगा revenue? What is the revenue I'm supposed to recognize over here? 1 lakh divided by, बोल दीजिए ना, how much percentage I'm supposed to recognize over here? Divided by 4 lakhs.
into 3 lakhs, which is nothing but proportionate matlab the amount of work completed divided by the total amount of work into total revenue, which is nothing but 75,000. That is what now I had completed three portions of work of total, which is 75%. So I will recognize 75% of the 1 lakh, which is 75,000. So as on 31st March, I will recognize 75,000 as my revenue in my books of accounts. Okay. Can you able to understand? Hello. Yes, sir. Thanks. So so what I'm trying to say is ki in a fixed cost and in a cost plus contract, recognizing the revenue in a cost plus contract is very easy, because I will be easily able to say that ki out of 10 whatever the cost incurred, 10% will be recognized as revenue. The problem comes, or the difficulty is, with the fixed price concept. Why? Because here we don't know, because simply I said that ki 5 lakhs will be the entire cost of the sofa, or it includes the my revenue also. So now the recognition of revenue from this will be the difficult part. Okay. And the amount, so for which this contract, this AS is applicable. Now let us identify how to recognize the revenue. In a general definition, the contract revenue is profit or loss is equals to simply contract revenue minus contract cost. Okay. So as in the accounting standard 2 AS2, we had similar kind of thing. How to identify the valuation of inventories? What is the formula? The simple formula we had gone through yesterday. Can somebody please reproduce? What is the simple formula of recognizing a inventory? Whichever is lower of two. What are those two? Can kindly somebody please say? कल तो तुम लोग है ही है ना क्लास में. Hello. Hello. Yes, sir. AS2, while valuation of inventory, we will be taking lower of two costs. What are these two? कल ही मैंने बता दिया था. AS2 valuation of inventories में we will be recognizing the inventory value either of two. A simple thing. What are those two? Cost or NRV. We'll be valuing the inventory at either of two, cost or NRV. कल तो वही बता दिया था ना. cost or NRV, दोनों में whichever is lower, I will be recognizing my मतलब कि I will value my inventory at such cost. कल ही तो बता दिया था मैंने. So then we had decided what is cost and what is NRV. I had clearly told cost का मतलब क्या क्या involved होता है, NRV में क्या क्या involved होता है. अगर if the cost is less, then I'll recognize the inventory at cost, and if the NRV is less, I'll recognize it NRV. Yesterday itself we had discussed here, and this is very basic thing. Profit or loss is equals to contract revenue minus contract cost. So now we will be identifying what is contract revenue and what is contract cost. Simple.
So now, in order to identify, now we'll be understanding what is involved in the contract revenue. Let us identify. Generally, contract revenue involves the 5 lakhs agreed price. That is nothing but मैंने जो डिसाइड किया था 5 लाख लगेगा करके. So the 5 lakhs will be the straight away price, agreed price. Now, say for example, even you know this thing, like take a second. Even you know this thing in a while construction, like say for example you want to construct your own house, so you will be calling for some guy, mestri or somebody else. You will be giving him the work and he will be asked to complete the task. While doing this, say the construction has been prolonged due to corona and all, the construction has prolonged and it is taking more than expected time and it is increased. Okay, say for example the cement cost, when we agreed for, or when we decided for the construction, 1 kilo is at 89 rupees. Okay, now after due to corona and all, the entire industry got affected. The same 1 kilo of cement as of today is costing me 100 rupees. Okay, so in a period of 1 year, what happened? In a period of 1 year, what happened? इसको क्या कहते हैं? The increase in the cost, इसको क्या कहता है? Please somebody. अरे यार ये छोड़ दो. मतलब कि एक एक साल, मतलब कि before 1 year the उड़द दाल, say for example 100 रुपीज, आज का दिन में it is 150. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ यार? रेट बढ़ गया. उसके ज्यादा क्या So the हुआ? cost price increases. कॉस्ट इंक्रीजेस. इसको क्या क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं. ओके, इन जनरल टर्म्स इन्फ्लेशन कहते हैं हम. सो एंड in other terms escalation भी कहता है. So in the if it is in the contract terminology, what happens is when the contract duration is more than 1 year, generally it is very difficult for a contractor to identify the future inflation. जनरली व्हाट हैपेंस इज कि आई विल से 5 lakhs एंड आई हैड डिसाइडेड कि ये 5 लाख फट से हो जाएगा. मैं रॉ मटेरियल आज का दिन में खरीद के लाऊंगा, रॉ मटेरियल ऑफ 3 lakhs, एंड मेरे को और खर्चा लगेगा 1 लाख फॉर माय लेबर एंड मेरे को 1 लाख बचेगा. सो दिस इज व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड. लेकिन इफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज मोर देन 1 year and I am supposed to buy the material of raw material as of, it is not possible for me to purchase entire raw material as of today and I am supposed to purchase the raw material after 1 year also, then I cannot account for the raw material cost as on today. Okay, तो इसीलिए I will ask that भाई साहब आपको मैं सोफा बना के दूंगा, लेकिन the amount of escalation as of today, say for example as of today, if it is available in the market the same price, I will get it. Say लेकिन the same raw material if I want to buy after 1 year, it has increased, say for example 10%, you are supposed to pay me that 110 rupees. This is nothing but we will say that key escalation. So whatever you had agreed price, in addition to that, if there is any escalation clause in the contract, then the escalation price also I am supposed to add to my revenue. Because generally in a contract having more than 1 year duration, we will be including a clause or asking the party to include, sir, please go for the escalation clause, because it is not possible for me as on today to identify what is my entire amount I am supposed to incur against this contract. So जितना भी escalation होगा, I will try to you are supposed to pay me that escalation price also. Say for example in companies also the simple funda is we will be. अच्छा ये बात बता दीजिए, how many of you are from Assam? I know like
अदर आउटसाइड असम कोई है क्या? आउटसाइड असम रीजन? ओके, यू आर फ्रॉम ओडिशा, राइट? Yes, sir. Okay, okay. So see, generally, what happens is even companies hire the vehicles for the normal daily affairs. Okay, when I hire the vehicle, or say for example, in a company like Oil India Limited, we will be hiring Bowsers. Bowser is such a thing which is used to carry the crude oil. Okay, so what happens is in the contract, the contractor will be able to give, arrange the Bowser. Bowser means nothing but you assume it as a transport carrier, lorry सोच लो, something kind of lorry. मतलब कि Bowser में you will be carrying the crude oil. So now what happens is the contractor will bring the Bowser to the company and he will use this. But what is the cost which is going to change daily basis? While running this Bowser, there is one cost which contractor cannot able to cannot will not have any control. What will be that cost? That driver or the contractor will not having control over this. अच्छा ये भी छोड़ दो यार, मैं बस चला रहा हूँ, आई एम ए बस ड्राइवर. ओके, फॉर ए बस ड्राइवर he wants to fix the price for the tickets. Bus cost is a fixed cost. Okay. Other than this bus cost, what are the costs involved in which the driver cannot able to assess, or every time he is supposed to review his cost? क्या क्या क्या? Exactly. Thank you. Thank you. See, if you do not start thinking on your own, it will be very difficult. Okay. एक second यार, I have to mute. See, the petrol prices is something, or diesel prices is something HSD, which even a contractor or normal guy will not have any control. Even say for example, मेरे को एक साल को say for example 10,000 लीटर्स लगेगा पेट्रोल, so एक ही बार मैं खरीद के रख सकता हूँ क्या? It is not possible. So the petrol I cannot even say इतना incur होगा करके even I cannot buy and keep with me, and I don't have any control on the price also. So this contractor over here, the Bowser contractor will says to me, Babu, ठीक है, I will be, you pay me say for example some fixed amount of 30,000 per month. लेकिन in addition to this, जितना भी किलोमीटर यूसेज होगा, and if there is change in the petrol price, HSD price over this period, you reimburse me the same. So these are the clauses in general in practical life used, because the contractor will not have any control on this HSD. So this is something which is talks like escalation price. Okay, so even that is also a revenue to me, revenue to the contractor. So even if it is such a clause in the contract, I am supposed to recognize that thing also. And here comes claims. What is a claim? See, the when I had hired this not Bowser, say sofa में example में ले लेते हैं. सोफा में मैंने बोला है मेरे को tell me two different types of woods. One is teak and other is, say for example, sandalwood यूज करते हैं. बड़ा लोग हैं, sandalwood यूज करते हैं. First of all, this is not supposed to be used. Say for example, I asked him to prepare with teak wood, which is costing 1 lakh. Then अचानक से मैंने बोला है that मेरा घर में they are asking for a sandalwood exclusively at some junction at some point. So the hand resting जो भी होगा वहां पे तुम सैंडलवुड लगाओ. ठीक है, उन्होंने क्या है वो सैंडलवुड लगा देगा. सो यू बाई going with for the sandalwood, he is supposed to, the contractor or the sofa maker will be incurring an expenditure. This is an extra claim which I am supposed to reimburse to the sofa maker. So any sort of claim or any sorry, this can be treated as variation. Okay.
So any sort of such a variation in the contract will also be amounts or tantamounts. Okay. Okay. So any this is not this is to be termed as variation, not claim. So any variation in the scope of work, any variation in scope of work will also be to variation in the scope of work. He is supposed to pay me my extra cost. So those all are also covered. This is in the nature of variation. In addition to variation, claims matlab, say for example, yeah, say for example, hmm, any claim matlab, say let us say in this fashion, claims comes in this way. Say the I had asked you to come and work in my site. Okay, मेरे को एक I asked you to come and prepare the sofa at my premises. Okay, and I told you to come on 1st of April. Okay, but when you came, तुम पूरा सामान लेके 1st of April you came to my house to prepare this. But I told you sorry आज मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ. I cannot able to give you my house. कल you come kindly come after 1 week. But when he came with all his men and materials, वो सारा सामान भी लेके आया और मनुष्य भी आ गया था ना. So now due to your lapse in providing or handing over the site, मैंने साइट मैंने दे नहीं पाया. फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर टू कंप्लीट द वर्क इन माई साइट आई डिड नॉट गिवन माई हाउस. मतलब कि मैंने बुलाया है कि यू कम एंड वर्क इन माई हाउस, लेकिन आई एम नॉट हैंडिंग ओवर यू द साइट. और say for example I had asked you to come and in an oil company I'd asked you to come and drill at certain location, but when you came to drill over here the locals or somebody is protesting saying that ki, no you are not supposed to drill here due to we are staying here, and the locals are protesting. So when a contractor comes to drill here, when I am not able to give him the site, where will he drill? He cannot able to drill there. So now, because of the lapse at my point, the contractor says that ki, जो हो गया, because of you, I am incurring losses. So you are supposed to pay me my losses. Or say, for example, there can be a clause stating that ki, you are supposed to pay me back the ideal charge of per day of say for example 1,000 rupees per day ideal charge. So now these sort of any sort of such a thing which is arises as a part of duration as the execution of the contract, all those claims are also to be recognized as my revenue. Okay, next comes any incentives. What is meant by incentive? Can somebody say what is meant by incentive? इंसेंटिव मतलब क्या है? फायदा क्या क्या फायदा है. ओके कुछ मतलब प्रॉफिट देते हैं, सुविधा. ओके, इन एडिशन टू दैट और कुछ हो सकता है क्या? बोनस. ओके आकाश, और कुछ? प्रतीक्षा? बोनस. See, so first of all, incentive is a kind of मतलब कि positive aspect. It's a benefit. So what happens is, say I had asked him to complete this sofa in 2 years. मेरे को 2 साल में कंप्लीट करके दे दो बोला है. एंड ये भी क्लॉज बोला है कि अगर तुम मेरे को 1.5 year में कंप्लीट करके दिया है तो मैं तुमको 10,000 ज्यादा दूंगा. ओके, अगर इफ यू आर एबल टू रिड्यूस दिस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन बाय 6 months, 1.5 years मतलब 6 months तुमने जल्दी फटाफट करके दे दिया, तो देन आई विल गिव एन इंसेंटिव ऑफ 10,000 rupees. ओके, दिस इज in the nature of incentive. Incentive means such a thing in addition to the agreed thing, if there is any such a kind of thing in addition to the agreed price, so these incentives is also my revenue. So these are also I'm supposed to recognize. And last comes the penalties. Now penalties can be two ways. Now claim यहाँ पे variation is also can be two ways.
when I asked you to prepare the sofa of 6 chairs, sofa set with 6 chairs. Then later I told you ki, no, I don't want 6 chairs, only make it as 4 chairs. Then proportionately, due to variation in the scope of the contract, the amount I am supposed to pay also reduces. That is a variation. Now here comes the penalties. Penalties क्यों आ सकता है? Because just like here I told, if you are able to complete in 1.5 year, I'll give you an incentive of 10,000. Say for example, if you are not completing and it is exceeding 2 years, then I'll impose 1,000 rupees penalty for every week delay. For every week delay, I'll impose 1,000 rupees penalty on you. And now penalty can be other way also. Just like here I told the claims, if say uh, say for example, I am supposed to give the wood to the manufacturer. Wood I am supposed to purchase and give it to the contractor. Lekin when he came to me and asked about the wood, I told, as of today it is not available in the market. Only after 1 month I can able to give you the wood. Then what he will say? Okay, because of you I'm getting the delay or my work was reduced. So then I will charge you 1,000 rupees of per every week delay. Then see, for a contractor, this is revenue and this is loss. So now I should, if whenever I say penalty, this can be in the nature of both plus or minus. So if it is plus, I will add. If it is minus, if it is a loss to me, I'll deduct. So penalties can be not just not just in a positive manner. It can be in both ways also, just like variation. Okay, plus or minus. Now come here comes हो गया. तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो मैंने रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, वी हैड गॉन थ्रू. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू. Okay, now let us identify the methods involved in revenue recognition. Now this is revenue recognition for the period whatsoever. Now this has two rules. One is a general rule. To identify this thing, we have two rules. One is a general rule and the other one is an exceptional rule. Now, what is a general rule? General rule says that is very simple. If you try to understand, here we will be recognizing in terms of percentage of completion. Actually, there are three types in which you can recognize the revenue. One is like percentage completion, and another is survey method, and another is completion of physical proportion of the contract. Okay. So now let us identify what is or understand what is percentage of completion method in identifying or recognizing the revenue. In a percentage of completion method, I'll simply give you the formula. So for example, how to say, revenue is equals to uh, total or agree total बोलते हैं, total revenue और से तो कॉन्ट्रैक्ट करना. तो हाँ, total contract revenue multiplied with percentage of work completed or work completion. So simply
से फॉर एग्जांपल 5 लाख मैंने एग्री कर दिया है एंड एंड ऑफ द ईयर आई हैड मैंने चेक किया है, अच्छा कितना काम कंप्लीट हुआ, से फॉर एग्जांपल 50% ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, so simply my revenue will be 2,50,000 rupees. Okay. Simply my revenue will be 2,50,000 rupees. As good as that. Now, लेकिन the percentage of work completed मैं कैसे determine करूँगा? That is the easy problem. Percentage of work completed. How to identify this percentage of work completed? Or in which manner I can able to identify this? Because say in a sofa set, how will you say that कि chair भी है यहाँ, टेबल भी है. Now यहाँ मैं बोल देता हूँ कि I had completed this piece and I had completed one of this piece. How can I identify and say that कि कितना percentage complete हुआ? Say for example among this I had completed only the 2 chairs and half of this, or only the legs has been completed in the center table. How will I identify or the percentage of completion? It is very difficult for any person to identify with respect to the physical component in such a kind of thing. So there comes the methods like proportionate cost method. Proportionate cost method. इसका मतलब क्या है? Simply what will I do is, of course 5 लाख मैंने एग्री कर दिया, 5 लाख includes my profit also. But when I speak about percentage of cost method, there is no such a thing called profit. I will be speaking, say for example, I had estimated the total amount of expenditure or cost I'm going to incur will be 4 lakhs. And I had checked from in my books of accounts stating that after what are the amounts I had paid for material, for labor, etc., etc., etc. Material, labor, other expenditure. So when I had gone through the books of accounts, I came to realize that so far I had incurred 2 lakh rupees. Okay. So proportional cost method says that okay, you had incurred 2 lakhs of total cost of 4 lakhs. कितना percentage है? 50. So what will I say that simply since you had executed or completed 50%, simple 5 lakhs into 50%, you are supposed to recognize the revenue of 2.5 lakhs. Okay, समझ गया? This is proportionate cost method. Now there is as I was saying, there is another thing called proportionate. In addition to this proportionate cost method, there is another thing called proportionate physical work completion. As I told you, मतलब कि इसमें ये इतना हुआ उतना हुआ करके. What is that proportionate? I'll write here. What is that proportionate physical work completion? सर ये आपने जो किया टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्यूटेड, ये कौन सा मतलब मेथड है, वो जनरल रेट वाला या? ये वाला? हाँ इसके बारे में पूछ रहा है ना? दिस इज हाँ, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड. और आगे वाला ये आगे वाला मतलब ये वाला 2.5 लाख वाला? डायलॉग वाला इज ओके फाइन. हियर दिस 50% जो था ना, यही इसके बारे में पूछ रहे हैं ना? जी सर, जी सर. नाउ ये 50% कैसे अराइव करूंगा? देर आर 3 मेथड्स. वन इज प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड, and another is proportionate physical work, and another is survey method. ये 50% यहां से आया. See, I need to multiply it with the percentage of work completed, right? Now we are identifying वो percentage of work completed कैसे करता है करके. The percentage of work completed, in order to identify the percentage of work completed, I am having 3 methods. Another, okay,
that is proportionate cost method, proportionate physical work completion method, and another method is survey method. Now you got? Yes, sir. So that 50% straight away कैसे मिला? यहाँ मैंने cost के मुताबिक I identified. अच्छा 50% of the cost मेरे को complete हुआ, so I had gone there and applied the 50%. Simply this is the way. 50% identify करने के लिए I am using this method, the proportionate cost method, and another method is proportionate physical work completion method. Say for example here in this thing it is not possible for me to go with the physical work completed. Say for example I am constructing a multi-story building of 4 floors. Okay, now as of 31st March I had gone there and checked, 2 floor बन चुका है. It is as good as simple. अच्छा, out of 4 floors 2 floors has been completed और 2 बाकी है. तो simply I can say that कि physical में देख के physical work completion में I will say that कि 50% of the work has been completed. Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. Now another way is survey cost, or nice, not survey cost, I'm sorry, this should be like survey method. Okay, what is survey method? In a survey method, very simple. आप लोग से कोई इंजीनियर है क्या? Or all, sorry, you're all commerce background, sorry. The previous batch there are engineers. So in survey method, an engineer comes and he does his own survey, because engineer knows exactly what to consider, what not to consider. Say for example in physical completion, in the physical work completion method, I had simply taken 50%, but the surveyor comes and says that no idiot, you had completed 2 floors, but in the 2 floors the ground floor has lot of work involved. The ground floor involves like the foundation thing. For a foundation thing, it is the cost involved is more than a normal thing. So he will says that for this foundation you had incurred more cost. I will say that the percentage of total completion is not 50, it is 60%. तो जो सर्वेयर जो बोलेगा डायरेक्टली आके साइट पे, that will be taken as my percentage of completed. Okay, understood? Yes, sir. Now हमारा हाथ में क्या रहेगा generally out of these 3 methods? As an accountant, what is with us? सर फर्स्ट तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड रहेगा ना? Exactly. How and why not these two? Because एक तो we are not engineers and दूसरा physical work के देख के बताने के लिए we are not experts. But how can we say about cost? Cost को क्यों, तो cost की भी तो कैसे बोल सकते हैं हम as an accountant, or because we are, oh shit, कहाँ गया? हाँ, because as an accountant we will be having the access to the total costs incurred so far. Okay, so मैं जाके मैं सारा बिल्स वगैरह मेरा बगल में रख के आई विल गो थ्रू दो एंटायर बिल्स, तब पता चलेगा कि अच्छा कितना इसको इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ. एक सेकंड यार, मैं कहा गया, मेरे को नहीं समझ आ रहा है. हाँ हाँ हाँ, या so as an accountant we will be having the access to the entire cost incurred so far. So मैं सारा cost को plus करके देख लेता हूँ, then I will be having the assessment of कि अच्छा generally इसको कितना खर्चा हो रहा है, वो estimated expenditure भी रहता है. तो I can easily say that कि with respect to the cost 50% or 40% whatsoever I will calculate being an accountant, but not the other two methods. तो इसीलिए the proportionate cost method is what is we are going to use in identifying the revenue in our books of accounts. समझ गया? 3 types of methods. सर फॉर्मूला अच्छे से लिख देंगे क्या? मतलब क्लैमजी हो गया, पता नहीं चला. वेरी गुड, सिंपली यार, मतलब कि इसमें तो कुछ है ही नहीं. आप लोग लिख रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट. मैं फिर से लिख लेता हूँ. सर पहले तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही रेवेन्यू मतलब वो निकालेगा ना? एग्जैक्टली. Contract revenue for the period is equals to total contract revenue
अच्छा ये आप बता दीजिए, what is the difference between contract revenue for the period and total contract revenue? Somebody please say. What is the जी सर, difference between contract revenue for the period and total contract revenue? The contract revenue for the period means for a particular time, and total contract revenue is the all total after. Very good. And the other part? Other part? Total contract revenue. जी The other part is the total contract revenue. हाँ, मतलब in our example say 5 lakhs. See, this accounting standard is, because this is we all know, say for example 5 lakhs, okay, 5 lakhs तो हमको पता ही है total contract revenue, but for a particular duration, say for the contract is for 3 years, 1 year has completed, this in among this 1 year how much I am supposed to recognize among these 5 lakhs, that is what the issue arises. So now out of this 5 lakhs मैं कितना recognize करूंगा in my books of accounts over a particular period of year, for which I will apply this total contract revenue into percentage of work completed. तभी मतलब सर कितना कंप्लीट हुआ वो पता चलेगा ना? हाँ, नाउ वो परसेंटेज ऑफ वर्क कितना कंप्लीट हुआ पता चलता है? नो 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 नो, यहाँ पे कितना वर्क कंप्लीट हुआ पता चलता है बाय 3 मेथड्स. One is, as I told, proportionate cost method, okay, or else in your books it was written as cost to cost method, okay. In your material it was said as cost to cost, okay. And the other is like physical, and the third is survey. So now in order to identify what is the percentage, I will be using these three. Now as an accountant it is easy, and we will be following the cost to cost method. As per the cost to cost method मेरे को पता चलता है कि अच्छा 50% काम हुआ है. Then I will say out of this 50 lakhs, in this 1 year I completed 50% of the work. So see, if the sofa is completed, manufacturing of sofa is completed, I will be getting total 5 lakhs. But sofa तो complete नहीं हुआ. मेरे को तो रेवेन्यू कब मिलेगा? एंटायर काम होके मेरे को सोफा देने के बाद मैं 5 लाख दूंगा, तब तक तो मेरे को काम मतलब कि कुछ पैसा तो नहीं मिलेगा. लेकिन व्हाट इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट? एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? somebody please say what is meant by accrual concept? आपका बेसिक्स है. See, as per the accrual concept, I am supposed to recognize my revenue or 8 seconds. Now, as per the accrual concept, I am supposed to recognize my revenue on accrual basis. Like, see, I'm on the costs and revenues on the. So now, out of this 5 lakhs, I am entitled for the 50% of the work. In the first year, I had completed 50%. So I am entitled for the 2,50,000 rupees. So in order to recognize what I am supposed to enter in my books of accounts, मेरे को तो मिल ही जाएगा. Entire 5 lakhs I am not going to I am not going to get in the second year. Already I am eligible to receive 1 lakh in the first year. So that's why 5 lakhs into 50%, 2,50,000, I will recognize in my books of accounts. So if somebody asks, Mr. Ram, what is your revenue for the year? I will say 2,50,000 is my revenue. But they will be asking, Acha, but we had but you did not got any amount from for this 2,50,000 rupees. तुम तो sofa complete नहीं किया. Then I will say, although I had not completed my sofa and I had delivered, but I had completed 50% of the work, and against which I am recognizing this revenue, because now I am entitled to get this revenue. So this is what standard says. And okay, समझ आ रहा है?
Can you able to understand? Hello. जी सर, जी सर, जी Okay. सर. Okay. तो हमने यहाँ एक और मैं बोलता हूँ कि विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट how to identify इसकी. Say for example I had told you that in the previous example I had told you that 3 lakhs divided by 4 lakhs into directly तुम्हारा revenue. So this way you will be identifying the percentage completion. उसके लिए एक फॉर्मूला तरीका से पुट अप करने से cost incurred till date, which is nothing but 3 lakhs or 2 lakhs. Sorry, in this example it was 2 lakhs. And next, cost incurred till date plus estimated per cost. See what is happening here. You have 2 lakh or 4 lakh जो भी हो. See, cost incurred till date is 2 lakhs. Okay. In this case I know that कि the total cost I am going to incur is 4 lakhs. मेरे को तो ऑलरेडी पहले से ही पता है कि 4 lakhs होगा, लेकिन sometimes it is not possible for me to identify the entire cost also. Then what will I say? अब तक जितना cost incur हुआ है उतना plus in order to complete that entire sofa, what is the cost I am going to incur as of now? Because say for example as of today I realized that कि although I had fixed the price of 5 lakhs, I am supposed to purchase some raw material and the raw material cost has increased. Now if I am estimating the completion cost, now say for example 2 lakhs I had incurred and another say for example 2.5 lakhs I am going to incur because of the inflation, then the percentage of cost completion will be differs. 2 lakhs divided by 400 of 4.5 lakhs, कितना परसेंटेज आएगा? किसी के पास कैलकुलेटर तो बताओ. कितना आएगा? किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? सी ये क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बोल सकते तुम. तो नाउ हियर वी हैड सिंपली टोल्ड दैट कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में हमने क्या किया, यहाँ 2 lakhs डिवाइडेड बाई 4 lakhs इंटू 100 मार दिया है कि नहीं. 2 lakhs इज अब तक जितना खर्चा हुआ 2 lakhs हुआ एंड नीचे 4 लाख मेरे को पता है कि पूरा सोफा बनाने में 4 लाख होगा, तो इसलिए 2 lakhs बाई 4 lakhs रख दिया. ये 2 लाख बाई 4 लाख को मैं फॉर्मूला मोड में बता रहा हूँ यहाँ पे, which is cost incurred till date, which is 2 lakhs divided by cost incurred till date already 2 lakhs plus estimated further cost of completion, which is nothing but in our example it was only 2 lakhs, but what I'm saying, there can be a chance that the estimated future cost, इसको फर्दर और फ्यूचर कर सकते हैं, एस्टिमेटेड फर्दर और फ्यूचर, estimated future cost of completion, future ही कर दीजिए, estimated future cost of completion will be sometimes if my as per my original estimation 2 लाख भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है. अगर if I am assuming that कि this cost is going to be increased 2.5 lakhs होगा करके, then the revenue I am supposed to recognize is not 50% but 44.44% only. Are you getting the point? So 5 फिर से lakhs. एक बार. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं बोल रहा हूँ. सी इन आवर एग्जाम्पल हमको पता है कि टोटल सोफा का कितना खर्चा होगा करके हमने सोचा है 4 लाख, है कि नहीं? जी सर. नाउ फर्स्ट ईयर में अब तक मैंने कितना खर्चा कर दिया इन आवर एग्जाम्पल 2 lakhs. ओके. 2 lakhs. हाँ. नाउ सो अगर एज्यूमिंग दैट कि मेरे को 4 lakhs सी होगा, एंटायर कॉस्ट ऑफ द सोफा विल बी ओनली 4 lakhs, तब व्हाट इज माय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? 50%. Exactly.
out of entire 4 lakhs or 2 lakhs has incurred, so राइट अवे 50%। लेकिन आज का दिन में मेरे को पता चल रहा है कि ओ नो नो नो, ड्यू टू सम रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड और लेबर कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, नॉट जस्ट 4 lakhs, इट इज गोइंग टू बी 4.5 lakhs। ओके, 4,50,000 होगा मेरे को खर्चा सोचा है हमने आज का दिन में। देन then I am supposed to recognize the sorry, I am supposed to change my identify the exact percentage of completion. Now I had thought that कि 2 लाख नहीं, 2,50,000 और भी खर्चा होने वाला है। इसका मतलब अब तक तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 2 लाख ही हुआ आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4.5 lakhs। ओके ना, समझ आ रहा है? इसका Yes, मतलब sir. नथिंग बट अब तक मैंने 2 लाख का काम कर चुका है और भी 2.5 lakhs काम बाकी है। नाउ माय रेवेन्यू इज 1 lakh, राइट? माय प्रॉफिट इज 1 lakh, राइट? लेकिन Yes, sir. दिस 1 lakh इज फॉर, मैंने पहले सोचा है कि 4 lakhs का इतना रेवेन्यू मिलेगा करके, लेकिन नाउ माय कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 lakhs टू 4.5 lakhs, है कि नहीं? एट द सेम टाइम अगर 4.5 lakhs हो गया तो मेरा प्रॉफिट भी घट जाएगा, हाँ 50,000 हो जाएगा सर। 50,000 हो जाएगा। एंड मेरा काम भी 50% काम हुआ, मतलब जब बोलूंगा जब 2.25 lakhs का काम किया हो तो तभी 50% हो सकता है। सिंस आई हैड Yes. ओनली कंप्लीटेड 2 lakhs वर्क, द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड ऑफ दिस सोफा इज ओनली 44%। ओके, नाउ बिकॉज वी, अगर यही फिजिकल मेथड है तो मैं बोल दूंगा कि फिजिकल मेथड में 2 स्टेयर्स कंप्लीट हुआ सो 50%। लेकिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में जा रहे हैं, जब कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में जा रहे हैं द कॉस्ट सो फार इंकर्ड इज ओनली 44%। सो इसीलिए माय रेवेन्यू आई विल आल्सो रिकॉग्नाइज ओनली 44% ऑफ 5 lakhs। समझ आया? तुम लोग को प्रॉब्लम इलस्ट्रेशंस करने में और भी आसान से समझ आएगा। ओके, सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस लाइक अंडरस्टैंड और नोट डाउन दिस थिंग, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ओके सर ये मतलब हेडिंग क्या होगा इस फॉर्मूला का मतलब? गुड बॉय, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड लिख लीजिए। सर इसमें बताया है मतलब वो जब 5 लाख होगा मतलब वो 1 लाख का प्रॉफिट रहेगा तब 2 लाख ऑलरेडी काम हो गया है तभी 50% रहेगा। अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो 4 लाख से 50,000 बढ़ गया तो मतलब 44.4444 मतलब प्रॉफिट रहेगा। यस यस, यस। see there are two things here you need to understand in this standard. We are speaking about the revenue. What is the revenue and what is the profit? Revenue and profit का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? Somebody please. रेवेन्यू मतलब इनकम है सर। And what about profit? प्रॉफिट मतलब बेनिफिट। In other words, somebody else. रेवेन्यू का इनकम का फर्क कहाँ पे आता है? What is the difference? See, प्रॉफिट का जब एंटायर टर्नओवर को हम रेवेन्यू बोलता है। ओके, इन एन से फॉर एग्जांपल द एंटायर टर्नओवर मेरे को साल में 10,00,000 का नहीं तो 10 lakhs का क्रूड मैंने बेच दिया, दैट एंटायर 10 lakhs वर्थ ऑफ क्रूड सेल्स इज माय रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट और इनकम इज 10 lakhs वर्थ ऑफ क्रूड को मेरा एक्सपेंडिचर सारा निकालने के बाद मिलेगा कि ओनली 1 lakh rupees। Okay, so that 1 lakh is my income or profit. Revenue and profit are two different things. Now you got? समझ आ पा रहे हैं? और फिर से बोलो। यस सर यस यस सर। ऐसे कल भी बोला था ना कि इन्हें मतलब कि यहाँ पे जीपी होता है, यहाँ पे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स यहाँ जो होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक, द टोटल्स। सो नाउ सर फॉर्मूला हट गया सर। फॉर्मूला हट गया, मैं निकाल दूँ, मैं फिर से आ जाता हूँ।
So see, this sales is revenue. Okay, यहाँ पे जो भी सेल्स बोलता है ना उसको हम कहते हैं कि रेवेन्यू, लेकिन दिस इज प्रॉफिट. That 1 lakh rupees is depicted here, but my revenue is total is 5 lakhs. Out of 5 lakhs in this year I will recognize only how much? 1 lakh. No, No, 2 lakh 50,000. 2,50,000. 2 lakh 50,000 और 44%, 5 lakhs में 44% जितना होगा 2 lakh 22,000. Yes sir, yes sir. ओके, दिस मतलब कि मैंने मेरा रेवेन्यू में मैं सेल्स में ये रिकॉग्नाइज करूंगा. ओके, we are not speaking about the profit now, we are speaking about the revenue. Okay, this is the formula: cost incurred till date divided by cost incurred till date plus estimated future cost of production. आप लोग का टाइम हो गया, लेट मी कंफर्म. आप लोग प्लीज स्टे ऑन द लाइन, मैं एक बार कॉल करके पूछता हूँ कि फैकल्टी आया है कि नहीं. Let us wait. मतलब कि I was not sure whether service will be available to take the costing class or not. मैं अभी फोन करके बात किया था, थोड़ी देर में बता देंगे. सर प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड था क्या, वो क्या था सर ये? This is proportionate cost method or we can say cost to cost method. Okay, proportionate cost method लिख लीजिए. ओके सर. आपका टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड. एक सेकेंड यार, मेरे को कॉल आ रहा है. हेलो, हाँ क्या हुआ? हेलो यार, यह मतलब कि सुना दे रहा ना? यस सर. हाँ हाँ, आज तो तुम लोग को मेरे साथ ही रहना पड़ेगा. सर इज नॉट कमिंग, सो बात नहीं सर, कोई बात नहीं. हाँ. So now this is the cost to cost method, and now ये हो गया the formula how to recognize the revenue. Now another, there are two rules as I told you. One is general rule and another is exceptional rule. If you observe here, सर ये जनरल रूल है या एक्सेप्शनल है? exactly, I am coming there. So this is now we are now till now we had speaking about general rule. Now we will go with the exceptional rule. In a general rule, we use the percentage of completion method, which is nothing but revenue is equals to total contract revenue into percentage work completed. Percentage of work completed को तीन तरीका से निकाल सकता है. एक तो proportionate cost, survey method, physical completion method.
ये हो गया जनरल रूल. नाउ वी विल गो विद द एक्सेप्शनल रूल. ओके. ओके सर. हाँ. Now let us understand the exceptional rule. When the outcome is not सर ये सर्वे मेथड और no 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 फिजिकल no मेथड का फॉर्मूला नहीं है क्या सर? वो मैं वही बोल रहा हूँ. For a accountant of like us, is it possible for the survey method or physical method? यस सर. नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि we are the accountant. So for an accountant, it is not possible for us to identify the cost with respect to, मतलब identify the revenue with respect to survey method or physical completion method. मैं जाके वहां पे सोफा को देखूंगा, अच्छा तुम ये बना लिया, अच्छा ये बना लिया, तो इसका मतलब 40% कंप्लीट हुआ करके मैं देख के नहीं बोल पाऊंगा. एंड इवन आई एम नॉट ए इंजीनियर वो सर्वे करके बोलने के लिए. तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. द ओनली थिंग व्हिच इज पॉसिबल फॉर अस इज कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड, एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आल्सो प्रिस्क्राइब्स द कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड in revenue recognition, not the other two methods. Okay. Okay sir. Understand sir. When the outcome of the contract is not possible, मतलब क्या है? not likely to happen, मतलब कि not likely to happen or not likely to complete. इफ यू मतलब कि ऐसा बहुत सारा चीज होता है वे मैं कर एक सेकेंड यार. सर ये क्या लिखा, नॉट क्या लिखा सर, वो हैपन अरे का? एक सेकेंड, वो मेरा कैंसर काम नहीं कर रहा है. ये कुछ नहीं, वो मैंने मतलब कि कचरा कर दिया बस. नॉट not का like मतलब? not likely to happen or not likely to complete. When the outcome of the contract is not possible, मतलब not likely to happen, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट नहीं कर पा रहा. ओके. जब इन सच सर्कमस्टेंस, से फॉर एग्जांपल बहुत सारा चीज गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स, मतलब कि तुम देखो ये डैम बनाऊंगा नहीं तो रोड बनाऊंगा बोल के वो रोड वाला कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद फंड्स रिलीज ही नहीं हो पाता है. गवर्नमेंट से जो फंड्स आना चाहिए वो फंड्स आता ही नहीं. जब फंड्स आता ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर सकता है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो यस सर, यस सच ए सर, यस. कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स अंडर हिज. गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहे, मैं काम नहीं कर पाऊंगा ना. सो व्हेन द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबल ऑफ फंड्स, और से फॉर एग्जांपल मैंने किसी और के कारण की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ. से फॉर एग्जांपल आई हैड आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर दिस सोफा सेट, and then while preparing he comes to realize that कि the usage of teak wood is a crime. मतलब कि गवर्नमेंट ने बैन किया एंटायर यूसेज ऑफ टीक वुड. टीक वुड जब गवर्नमेंट बैन करेगा, हाउ कैन ही प्रिपेयर द मैन्युफैक्चर दिस? दैट इज अ क्राइम. सो द कंप्लीशन ऑफ द सोफा विल इज गॉन. he cannot able to complete the sofa set. Other naya alag se he is supposed to prepare. So when such a circumstance arises, then how to recognize the revenue? Now then comes recognize the revenue only
to the extent of cost incurred for which recovery is possible. Recovery is possible. Recognize the revenue only to the extent of cost incurred for which recovery is possible. God. For which recovery is possible. मतलब मैंने से फॉर एग्जांपल रोड बनाने में फर्स्ट एक लेयर मैंने बनवा दिया था, लेकिन और से फॉर एग्जांपल आधा लेयर बना लिया था, नहीं तो वन साइड ऑफ द रोड आई हैड कंप्लीटेड द वर्क एंड फॉर विच गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिलीज द चेक, लेकिन पैसा नहीं मेरे को आने वाला है, थोड़ा लेट होगा. सो व्हेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी, only that amount I am supposed to recognize but not the entire. So recognize the revenue only to the extent of cost incurred for which recovery is possible. जितना भी मैंने खर्चा किया है उसका रिकवरी अगर पैसा मिल रहा है तो वही पैसा मैं रिकॉग्नाइज करूंगा. Say for example in the 5 lakh rupees I had incurred 2 lakhs rupees of cost, okay, and out of which 2 lakhs also only 1 lakh I am ready to pay. से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 lakhs हैज इंकर्ड, देन उनको देख के ठीक है तुम्हारा गलती भी नहीं है मेरा गलती भी नहीं है, तो ठीक है तुम्हारा क्या है लेना देना, you take 1 lakh. I'm paying him the 1 lakh for the sofa, half completed or only 44% completed sofa ko I'm paying him 1 lakh. Then what amount I'm supposed to recognize here? Only the 1 lakh, uh, but not the actual revenue which we had computed over there, 2,22,222. वो नहीं है, since only 1 lakh I am going to recover, so I am going to recognize only that 1 lakh rupees. समझ आ रहा है? जी सर. Okay. What will the case when recovery is not possible? मैंने बोला है कि भाई साहब मेरे को सोफा नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा आधा हुआ काम के लिए मैं क्या पे करूं, 1 लाख मैं क्यों नुकसान करूंगा? I will not go, I don't want to pay that 1 lakh also. Then what happens? When recovery is not possible at all, then what happens? You treat the entire cost so far incurred as loss, or say for example bad debts, or you are supposed to make a provision in the profit and loss account. Are you getting this? Yes sir. When Yes. I recognize, when there is when the chance of recovery of my cost is nil, जितना भी खर्चा 2 लाख हुआ ये into percentage of completion कुछ भी काम नहीं करेगा. The entire amount of 2 lakhs I must recognize as my loss in my books of accounts. वहां पे recognition of revenue नहीं loss होगा. समझ आ रहे हैं? And now वहां पर when मतलब रिकवरी का उम्मीद नहीं होगा, वहां पूरा टोटली लॉस होगा सर. exactly, you are exactly correct. So when there is the chance of recovery is nil, I should recognize the loss. इसी को हम कहता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में वही है, द एक्सपेक्टेड द प्रोबेबल लॉसेस आर सपोज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटेड फॉर. तो नाउ माय लॉस मेरे को पक्का ही पता है कि ये लॉस होने वाला ही है. जब लॉस होने वाला ही पता है, तुम 2 साल पूरा कंप्लीट होके जब पैसा नहीं मिल रहे करके जब पता चला तब तक क्यों वेट करेगा? आज का दिन में ठीक है 2 लाख नुकसान हो गया, 2 लाख नुकसान मैं मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में निकाल के आई विल शो द लॉस एंड आई विल अकाउंट फॉर. दैट इज व्हाट हियर इट सेज. ओके. यस सर. ओके.
Now let us understand what is the contract cost. अब तक हमने सुना है व्हाट इज हाउ टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. ओके, हमारा एक ही मकसद था प्रॉफिट और लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. Now till now we had discussed about contract revenue and वो revenue recognize करने के लिए we had incurred मतलब कि we had different types of methods to identify the cost. In general मतलब कि now once after recognizing the revenue of say for example 2,50,000, in order to identify the profit and loss, now I need to detect the cost also. वो कितना कॉस्ट में निकाल मतलब कि डिडक्ट करूंगा. दैट इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू डील. और say for example what are the things involved in the contract cost. The contract cost involves मतलब कि जनरली क्या कैसे कह सकता है कि इफ आप लोग का कॉस्ट शीट हुआ है क्या? आप लोग का कॉस्ट शीट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट हुआ है क्या? सर ने बता दिया होगा स्टार्टिंग क्लास में मैं एज पर एज माय नॉलेज. कॉस्ट शीट हुआ है क्या? कॉस्ट शीट मतलब पता है क्या? कॉस्ट शीट तो सर बीकॉम में तो किया था. बीकॉम में तो किया ही है. वंडरफुल. तो कॉस्ट शीट में स्टार्टिंग में तीन चीज होता है. व्हाट आर दोस थिंग्स इन द कॉस्ट शीट? प्राइम कॉस्ट होता है एक. वंडरफुल. व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व इन द प्राइम कॉस्ट? इतना सर याद नहीं आ रहा है. Okay, fine, you did great. See, direct materials, direct labor, direct expense, D. ये तीन इन्वॉल्व रहता है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. सो इस तीनों मतलब कि बोलता है कि प्राइम कॉस्ट में मतलब कि दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. So say for example for a contract in a contract if there are any costs which are directly if I am able to recognize material मेरे को कितना wood हुआ, कितना मैट्रेस का मतलब कि वो कॉटन कच्चा हुआ, कितना लेबर डायरेक्टली एक एक लेबर आके पर आवर बेसिस में कितना वेजेस ले रहे, those are all term मतलब कि directly attributable costs. And in addition to that there are some allocated costs. Allocated cost मतलब कि say for example I had used drilling machine or cutting machine. ड्रिलिंग और कटिंग मशीन भी लेके आके मैंने यूज किया है इसमें. सो ये मशीन मैंने सिर्फ एक सोफा खरीदने के लिए नहीं खरीदा. मेरे को पूरा आई एम यूजिंग दिस फॉर ऑल द फर्नीचर मेकिंग. सो बट I had used this machine for here say for example for 1 hour. So एक घंटा के लिए इस मशीन को I will allocate जितना भी खर्चा होगा. say for example इस मशीन मैंने रेंट पे लेके आया मेरे को per hour cost of rent is say for example 10 rupees and I had used for 4 hours. Then the allocated cost will be 40 rupees. Then the allocated cost will be 40 rupees. These are called allocated costs. So say for example I had a manager and manager comes and checks or supervisor. In this case say for example मेरे को एक supervisor है. तो supervisor आके he is checking the different sofa making processes and he has उसका salary है 10,000 and 10 सोफा हम बना रहे. तो the supervisor charges attributable to this sofa will be 1,000 rupees. So I will add 1,000 rupees of supervisor charges, which is like allocate. मतलब कि जहाँ जहाँ पे मैं allocate कर पा रहा हूँ, so those things I will add here. And in addition to that, specifically chargeable costs. So specifically or exclusively मैंने in addition to these things मैंने अलग से एक नया वो बोला है कि मैंने सोफा में यू इंक्लूड दिस डायमंड्स इन माय सोफा सो दैट कि मेरे को दिखने में अच्छा लगेगा.
तो मैं एक्सक्लूसिवली इसके लिए लेके आके डायमंड्स भी उसमें रख दिया था। तो दो विच आर इन स्पेसिफिक इन नेचर, तो स्पेसिफिकली उन लोग को कुछ वैसा है, तो इवन दोज कॉस्ट आर आल्सो टू बी टेकन इनटू माय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। these three things are to be identified, मतलब कि included in are included in the contract cost. Now what is meant by the contract cost for the period? ये तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ये तीन होता है, जहां जहां हो पाएगा आई एम सपोज टू ऐड ऑल दिस कॉस्ट, तभी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर द पीरियड? जस्ट लाइक प्रीवियसली वी टोल्ड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर द पीरियड मतलब क्या है? It means cost for a particular period of time. सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। नाउ से फॉर एग्जाम्पल उसमें दो चीज हो सकते हैं, मतलब वन इज ऑलरेडी हैड incurred and yet to be incurred। मतलब नथिंग सिंपली जो है, मतलब कि एक बंदा आके काम किया है, मतलब कि उन्होंने तुमने आधा हाफ ऑफ द वेजेस दे दिया है, हाफ ऑफ द वेजेस नहीं दिया। इवन दो इफ यू हैड नॉट गिवन हिम द सैलरी ऑफ सैलरी, बट यू आर सपोज टू गिव, वो तो देना ही पड़ेगा, विच इज अमाउंट इज पेएबल फॉर मी। सो ऑल द कॉस्ट विच आर ऑलरेडी पेड एंड विच आर सपोज टू बी पेड, दोनों मिला के जो भी होगा, दैट इज इन ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस कॉस्ट आई एम सपोज टू बी taken or account for the period costs। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, so this is the mota moti brief, or say I can say that key how to recognize the cost। say for example entire revenue minus the contract cost, you will be able to identify the profit or loss। this is the brief। कल हम मतलब कि we will go through the illustrations। आज के लिए I'll end the class। Sir, बोलिए, कुछ है तो बोलिए, बोलिए, कम ऑन। sir, the specifically chargeable cost can be repeated again. फिर से बोलिए, आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर वॉइस। So the specifically chargeable cost. स्पेसिफिकली Chargeable cost. हाँ, उसमें क्या है? Sir, repeated again. यू मीन टू, मतलब अरे तुम्हारा आवाज ढंग से नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में लिख लो इफ यू कैन एबल टू राइट इन अ चैट बॉक्स। स्पेसिफिकली एलोकेटेड कॉस्ट को क्या मतलब कि यू वांट ब्रीफ ऑन इट, और क्या चाहिए? Yes, sir, okay. वहाँ पे नीचे मैसेज का आइकन रहता है, वहाँ पे लिख लीजिए। ओके, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट ना, स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट बेसिकली, राइट। सी स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट मतलब कि दीज आर समथिंग लाइक तुम लोग को आएगा आने वाले दिन में फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट बोल के, मतलब कि हाउ कैन आई से, सी these are the costs which are like as I told you in the example, I need some extra item in my equipment। मैं सोफा में मैं बोला है कि मेरे को तुम अलग से कुछ नया पेंट लेके आके लगा दो करके। so this paint I had purchased exclusively for my sofa, and I'm incurring this expenditure on the sofa, which is in specific in nature। मेरे को तो जनरल कच्चा है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस इज ए जनरल डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट, बट the specific identifiable cost is like, say for example by in order to manufacture the sofa, मेरे को स्पेसिफिकली एक मशीन लेके इसी में यूज किया, वो मशीन किसी और पे मैं यूज ही नहीं किया। so that machine cost, entire machine cost, I'm supposed to include in the cost of this entire sofa, which is nothing but specifically chargeable cost।
तुम लोग को आगे आने में भी और इन द एग्जांपल्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब यू कैन एबल, आई कैन एबल टू एक्सप्लेन यू इन बेटर. These things are called as specifically chargeable costs. जहां जहां पे हो पाता है, those costs are also forming part of the contract cost. और कुछ चाहिए क्या? Anything else? Okay. So let us call it a day. अगर तुम लोग को इन्वेंट्रीज, मैंने बोला है इन्वेंट्रीज में कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछ लीजिए, एंड इन जनरल कुछ दिक्कत वगैरह है तो बात कर लीजिए, सो दैट आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प. इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प आई टेल यू. कुछ है तो if anybody wants to say something or if anybody wants to ask something, please ask. इस सब्जेक्ट और किसी और का सब्जेक्ट और इन जनरल कुछ है तो बता दीजिए. आज तो टाइम है बात करने के लिए, बिकॉज आप लोग का, सब लोग का किसी और क्लासेस तो नहीं हो रहा है ना? योर एवरीवन इज स्टेइंग एट होम, राइट? Yes, sir. प्रिपरेशन हो रहा है क्या? कुछ कर रहे हैं क्या सुबह से शाम तक? यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वैसे से काम हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो एग्जाम के प्रिपरेशन चल रहा है सर, किसका? अक्टूबर के कौन सा लिए, एग्जाम? कौन सा एग्जाम? और ग्रुप 2 का. ओ, ग्रुप 2 का यू हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू द कोचिंग? अक्टूबर में होगा सर. नहीं नहीं नहीं, मतलब कि ग्रुप 2 का तुमने कोचिंग करवा लिया? हाँ, पहले कर लिया है. ओह नाइस. कहाँ से आप? मैं भादरपासली से हूँ सर. असम का ही रीजन? हाँ, असम का ही हूँ. नाइस नाइस नाइस. तो प्रिपरेशन कैसे जा रहा है? प्रिपरेशन तो अच्छी चल रहा है सर. क्या चल रहा है ना? इन जनरली स्पीकिंग, सी दीज क्लासेस वी आर टेकिंग बहुत मुश्किल से हो रहा है यार, मतलब कि दिस इज नॉट इजी फॉर अस आल्सो. जनरली आगे सामने बैठेंगे तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी, बट ओवर द वर्चुअल मोड हाँ इट इज. सर, फिजिकली और मतलब ऑनलाइन का बहुत फर्क है सर. मतलब सेकंड ग्रुप का कर लिया था फिजिकली, अभी फर्स्ट ग्रुप का ऑनलाइन हो रहा है ना सर. हाँ यार, इवन मेरे को पढ़ाने में भी बहुत, मतलब कि वेरी अभी डाउट इतना अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है सर. डाउट्स भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते. मेरे को तुम लोग को समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तुम लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं कि नहीं, है तो फोन वहीं पे छोड़ के कहीं पे चला गया, क्या है कुछ समझ नहीं आता है. इट इज लाइक, मतलब somebody sees me, क्या है, मतलब कि खुद ही बात कर रहे, क्या सोच सकते हैं. मीटिंग्स तो ठीक है, ऐसा मीटिंग लगता तो है सर. मीटिंग में तो लोग बात करते, हम भी बात करते, वीडियो ऑन पे रहता है, लेकिन क्लासेस में मैं सम इन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है यार, मतलब मेरे को बहुत बोलने में भी इट इज नॉट सो गुड. मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है अच्छे से. नहीं, फास्ट फास्ट सर, मतलब समझने में थोड़ा वक्त लगा. आप मतलब फास्ट बोलते ना थे, तो अभी हाँ. इसीलिए. ओके ओके ओके, ठीक है, आई ट्राई टू रीच यू. तो इसलिए यार somebody अगर बोलता है कि तुम गधे जैसे ऐसे बात मत करो, थोड़ा आराम से बात करो बोल के, somebody should say something, please speak slowly और whatsoever, तभी मेरे को समझ पाएगा. आई कैन एबल टू reduce the speed और whatsoever. ठीक है. एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम फास्ट माय फास्ट 2 दिन का क्लास तो सर मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा होता. ओह शिट. ठीक है, कोई नहीं, पॉसिबल. आई रिपीट और आई आस्क हरीश टू रिपीट दोस चैप्टर्स. कोई चिंता नहीं, बिकॉज सिंस इट इज ओनली वर्चुअल मोड, हो जाएगा. और अभी एक तो क्लास. सर मतलब समझ में आ गया ना, मतलब अभी ठीक है. मैं अभी ठीक वही है. बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा था द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वाला, कि करना है कर दिया करके जैसा है, बट इवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे द क्लास वेंट ऑन. अभी सर ग्रुप 2 का मतलब हरीश सर को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं फिजिकली. उन लोगों को अच्छा अच्छा, उनको ओके ओके. मतलब किया था ना, तो चॉकलेट भी लेके आते हैं सर हम लोग को मोटिवेशन करने के लिए. अभी मतलब ओके पूरा फ्रेंड सर्कल बना के रखा था ना ओके ये ओके. चैनल में, तो अच्छा लगता है सर. नाइस नाइस. So कोई नहीं, he will continue the rest of the classes also. I will not take the next classes. Only thing is कि from Monday he will be joining. By that Yes. time जितना हो पाएगा I will try to take it up. Generally my area is financial management and costing, but this is the first time I'm taking the accountancy, and बोलने में भी through virtual mode it is very very difficult for me. कोई नहीं, जितना हो पाएगा हम कर लेते हैं. Even then I will ask Harish to repeat the concepts if you are not able to understand what I had told, so that he can take.
cover the सर तो standards. पहले तरफ से मतलब पढ़ा रहे हैं, आप लास्ट तरफ से मतलब अच्छे लग रहे हैं सर, मतलब ऐसे कोर्स जल्दी खत्म होगा तो अच्छा ही है। हाँ ठीक है, जितना हो पाएगा गॉड्स ग्रेस। अगर हो पाएंगे तो वर्चुअल मोड या एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं उन्होंने। हो जाएगा हो जाएगा। थैंक यू। बाकी थैंक यू लोग भी असम का ही है ना? जी सर। Yes, बाकी sir. एवरीबडी सर ओके, सब असम का ही है शायद। सब असम का ही है। Yes, sir. Okay. ठीक है, आप तुम लोग को समझ आ रहा है तो नहीं आ Yes. रहा है तो बीच बीच में बता देना, सो दैट कि मेरे को भी पता चलता है अच्छा ठीक है ये लोग सुन रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके सर। गुड नाइट। Yes, sir. Sir.